Hello friends, I am back with the chapter 1 introductory part 2 of the chapter knowing our numbers of class 6. So in the last class we have discussed about the ascending order and descending order and natural number and the whole numbers. Now we are going to discuss the topic place value of digits. According to Indian system, place value system हमारा क्या है? देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल. फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. H stands for 100, T stands for tens, O stands for ones, right? So these are series of periods like ones, thousand, lakhs, crores. So इनके सब डिवीजन है जिसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है. वंस के 3 सब डिवीजन है लाइक वंस, टेंस, 100, ones, tens, ones, tens, ones, tens. Let me explain you with the help of an example that how we can put it into the expanded form. If we get the question like 5,46,851, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है. सो हम कैसे करेंगे, राइट? देखो 5 है पहली डिजिट, 5 के बाद कितने डिजिट्स रिमेनिंग है? 1 2 3 4 5. दे आर 5 zeros. रिमेनिंग डिजिट्स हमारे 5 हैं, तो हम कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई लिख के 1 के साथ जितने रिमेनिंग डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो पुट कर देंगे. 1 2 3 4 5, राइट? 5 zeros हमने पुट कर दिया. उसके बाद देन ऐड साइन, नेक्स्ट डिजिट इज़ 4. After 4, how many digits remaining? 1 2 3 4. 4 digits, multiply 4 digits, 0. Then again plus sign, 6 is the next digit. How many remaining digits are there? 1 2 3, right? So we will put 3 0. Then next digit is 8. 2 digits are remaining. We will put 2 zeros. Then 5. 1 digit is remaining. We will put only 1 zero. Then 1. 1 के बाद तो कोई digit नहीं है, तो only 1. No zero is there. So this is how we can do the expanded form. Right, now I will explain you that how you can write the format easily and read the numbers. Like if you get the digit like 5,46,851. बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम 2 बार 1000 क्यों लिख रहे हैं. 1000 देखो वंस और टेंस दोनों हैं, सो इट विल बी 1000 ओनली एंड टेंस प्लेस वाला 10,000. ऐसे ही 1 लाख वंस वाला लाख, उसके बाद 10 lakhs, वंस करोड़, टेंस करोड़. तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 10,000, राइट? तो इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. तो इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे अब? $5 lakh, बिकॉज 5 के ऊपर लाख है. 46 ही पढ़ेंगे हम, इसको सिंपली लिख देंगे 46,851. इट्स ईजी टू राइट द नंबर नेम्स. जो जो ऊपर प्लेस वैल्यू है वही हम लिख देंगे, है ना? उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ योर होमवर्क. दिस वन इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू गिव मी द आंसर in the comment section. This one is homework. Simply ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, now I will explain you the use of commas.
Indian system, there are commas. First we need to skip the 3 digits 1, 2, 3, then comma, then 2 digits 1, 2, then comma. अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता और उसके बाद एक और होता तो हम 2 को छोड़ के फिर कॉमा लगाते. तो skip 3 digits first, then we can continue skipping the 2 digits. This is according to the Indian system, right? So this one is your homework. In this you have to put comma and write the place value above the digits and the number name. So this is one of your homework I am giving you, right? Now I will explain you international system of numeration. Values of the place in the international system of numeration are ones, tens, 100, then 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion, 10 billion, 100 billion, right? And so on. So it means 1 million is equals to 1000s, 1 billion is equals to 1000 million. So this is clear from this flow chart कि हमें कॉमा किसके बाद कितने डिजिट स्किप करना होगा. Obviously 3 digits we need to skip, because as you can see in the Indian numeration system there is only 3 column, then 2 division, right? That's why we skip 3 digits then 2 digits continuously. But on the other hand, if we discuss about the international system, we need to skip 3 digits continuously, right? So again repeating, ones, thousand, million, billion. These are periods of international system, and places ones, tens, 100, ones, tens, 100, ones, tens, 100 and again ones, tens, 100. So हमें इनमें 100 यानी कि 3 सब डिविजन देखने हैं. This following place value chart can be used to identify the digit in any place in the international system. Now for the use of commas, you can say you can skip the 3 digits, right? So if we take an example for writing the numeral, we can take, if the digit is so first we need to skip 3 digits for the commas, then again 3 digits. So हम इसमें place value कैसे लिखेंगे? Ones, tens, 100, ones, tens, 100. It means 1000, 10,000, 100,000, right? And इसमें million. So it will be 453,021. So this is all about the Indian system of numeration and the international system of numeration. In this video we have discussed the use of commas and the place value system. So please do the homework which I have gave you for the practice and comment your answers in the comment section. And if you are liking my work and if you want to continue these series, just comment below and do subscribe my channel. Thank you all of you.